Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss about the various techniques of PNF. So what is the goal of PNF technique? PNF technique हम क्यों अप्लाई करते हैं? जिससे कि हम फंक्शनल मूवमेंट करा सके पेशेंट का. किसके थ्रू? Facilitation, inhibition, strengthening and relaxation of muscle group. Depending upon the condition of the patient, कि उसको क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से वी विल अप्लाई द टेक्निक. ठीक है. PNF technique uses concentric, eccentric and isometric muscle contractions. So techniques are used to, so these are the aims. ठीक है. जो उनके इफ़ेक्ट्स होते हैं PNF टेक्निक के: इंक्रीज ROM स्ट्रेंथ, रिलीव मसल फटीग, इम्प्रूव स्टेबिलिटी, एंड्योरेंस, फंक्शनल परफॉर्मेंस, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस एंड posture. Then the techniques of PNF. So these are the techniques which we use in PNF. So these are the goal and these are the technique which we used to accomplish that particular goal which the therapist have decided. For example, to initiate motion, we will use rhythmic initiation and repeated stretch from the beginning of range. To learn a motion, we will use these techniques. So likewise, the goals are there and the following technique which is to be used. You can pause and jot down the points. So brief description of PNF techniques. सो फर्स्ट इज़ द रिदमिक रोटेशन एंड रिदमिक इनिशिएशन. तो बेसिकली क्या होता है ना रिदमिक इनिशिएशन में कि हम पेशेंट को एक आइडिया देते हैं मूवमेंट का. ठीक है. तो पहले हम पैसिव कराते हैं, देन एक्टिव असिस्टेड, देन एक्टिव एंड देन रजिस्टर्ड ROM. RROM इज रजिस्टर्ड ROM. तो इसका न्यूरोफिजियोलॉजी का रहता है डिक्रीजेज लेवल ऑफ एक्टिविटी इन द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS, which leads to decrease alpha motor neuron excitability. Next technique is combination of isotonics. तो इसमें हम concentric, eccentric and again concentric contraction use करते हैं of the agonist muscle. Sorry. It increases control through tendon contraction and agonist being stretched as lengthen and increases gamma bias. Then is the slow reversal, इसको dynamic reversal भी कहते हैं. तो इसके अंदर क्या होता है कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एगनिस्ट विदाउट रिलैक्सेशन बिटवीन द रिवर्सल. पर्पस क्या होता है इसका? टू इंक्रीज द एगनिस्ट मोशन, स्ट्रेंथन एगनिस्ट एंटागनिस्ट मसल. न्यूरोफिजियोलॉजी क्या हुई? इंक्रीज अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्साइटेशन वाया सक्सेसिव इंडक्शन एंड GTO स्ट्रेच स्टिमुलस. द नेक्स्ट टेक्निक इज स्लो रिवर्सल होल्ड. सो देयर इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन डन एट एनी रेंज विद स्लो रिवर्सल अप्लाइड वेयर स्टेबिलिटी नीडेड. पर्पस क्या होता है? स्टेबिलिटी इन सर्टेन ROM. एंड न्यूरोफिजियोलॉजी इज इंक्रीज रिक्रूटमेंट एंड irradiation. The next technique is alternating isometrics. So it is the isometric of agonist then antagonist with hands on the same side. So it is used as a precursor to rhythmic stabilization. It facilitates alpha and gamma motor neuron biasing of muscle spindle. Then rhythmic stabilization. Next technique. इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? Simultaneous isometric of agonist antagonist with hands on different sides. पर्पस क्या है? को contraction and stabilization. न्यूरोफिजियोलॉजी क्या हुई? फैसिलिटेट्स अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन बायसिंग ऑफ मसल स्पिंडल. रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एगनिस्ट एट वीकन्स, रिपीटेड स्ट्रेच बैक इनटू पैटर्न. इट फैसिलिटेट्स एगनिस्ट. न्यूरोफिजियोलॉजी स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड irradiation. Next technique is hold relax active movement, isometric in mid shortened position, relax, then lengthening position, quick stretch, then active assisted ROM, active ROM and resisted ROM. Neurophysiology is increased gamma bias, increased stretch sensitivity of intrafusal muscle fibers and decreases reciprocal inhibition of agonist. Next technique is contract, relax, hold, relax, move body part to limitation and ask for maximum contraction of the antagonist. It tightness. Neurophysiology is autogenic inhibition, Renshaw inhibition, supraspinal influences. Normal timing. Resist concentric motion until poor sequencing observed. Isometric on proximal segment and quick stretch on distal segment. Neurophysiology involved is movement related to subcortical level yields a more automatic response. Timing for emphasis. Whole pattern performed. Once weakness detected, isometric contraction at strong component with isotonic contraction at weaker component. Timing with extremity. Neurophysiology is irradiation, facilitation and normal sequencing. Resisted progression. The next technique description: increase strength and endurance, enhance normal timing of movement, proximal part stable and distal part mobile. It increases strength and endurance. Neurophysiology involved is resistance, increases demand, irradiation, cortical influence of effort. Thank you.